Okay, so this is what we were doing last time. So yesterday we were discussing uh, these things. This is from yesterday. We completed our discussion of const member functions. We talked about member initializer lists and how you can use those initializer lists to initialize the data members of a class. Member initializer lists are especially useful when you have a constant data member of a class, because constant data members of a class can only be initialized through member initializer lists. Member initializer lists are always executed before the body of the constructor function. Okay. We talked about class member access control or access specifiers. So we have been using private, public, and protected. But yesterday, like we formally talked about these access specifiers. So I guess we have been using private and public. Private is when something is declared as private, when a data member or a member function of a class is declared as private, it is only accessible to the member functions of that class or the friend functions or friend classes of that class. Okay, so we have mentioned friend classes or friend functions. We haven't formally learned how to declare friend functions or friend classes of a class. So we will do that towards the end of this part of the course. Similarly, we talked about constructors and destructors. We have been writing that. We have already talked about these functions in the context of one lab session on how to write constructors. We specifically mentioned the default constructor, which is provided in any case if you write it or not. Like if you do not write any constructor, the compiler provides you with a default constructor. The default constructor is the constructor which does not accept or receive any arguments. So it is a zero argument constructor. Okay? Now you can override the default constructor. You can change the behavior of the default constructor. Okay? So if you rewrite a function, so that is called function overriding. Usually we do function overriding whenever we are deriving a new class from an existing class. So you have an existing class, it does something in a specific way, and you want to change that functionality, you want to improve that functionality. So you can override existing behavior in new classes. Okay, so that you can do. This is called function overriding. So the default constructor, like it pretty much does nothing. Uh, the one that is provided to you by the compiler. But if you want to do something specific in the default constructor as well, so you can override that constructor. You can redefine it and write your own default constructor. We also talked about the copy constructor. So the copy constructor is invoked whenever you assign an existing object of a class to another object of a class. Whenever you do that assignment, so the copy constructor is called. We override, like we overrode the copy constructor as well. We redefined the copy constructor. Similarly, we talked about overloaded constructors as well. So you can create constructors that receive data in order to initialize the data members of that class. We also talked about destructors. So constructors are all about acquiring resources for new objects, and whenever those objects go out of scope, they need to be taken off the RAM. So then that process of taking them off the RAM, that needs to be done in a proper way. So you need some function which can return the resources that you acquired from the operating system, and that function is destructor function. Again, it is automatically invoked. And in the second part of this course, which is about data structures, we like data destructors are important functions. There you need to carefully write destructor functions. Then we talked about objects in memory, and in this context, we talked about this pointer. We said that when you create objects of a class, then each object has a separate copy of the data members, the non-static data members. So there is a separate copy of the non-static data members for every object. But an object is not just data members, it also has member functions. So do we have separate copies of the member functions for each object? The answer is no. We only have one copy of the member functions of a class, and for all the objects that one copy is basically called. So then the question was, okay, how does the member function,
how does every member function know for which object it has been invoked? So the answer to that is that every member function, it receives the address of the object for which it has been invoked, and it receives that address in a special pointer called this pointer. This is a keyword, so you can access from within that member function, you can access the address of the object for which that function was invoked using this pointer. We did that as well. Finally, we were talking about memory models and abstractions. So abstraction is something, this term, we use it very often in this course. And we say that like this course is also all about creating new abstractions. So you see a thing and you have a problem in which there are different objects that are interacting with each other, and you want to model that problem. So you create abstract objects of those you create abstractions of those objects, and then like you create those virtual objects that interact with each other. So this course is all about creating impressions or abstractions. So we, in this context, we talked about the specific abstract, the very common abstractions that you interact on a very daily basis, but maybe you do not realize that these things are abstractions. So we talked about the way data is stored on hard drives. So the physical hard drive is something else, like it is completely different, and the way data is stored and accessed and managed on the hard drive, that is completely different. And the virtual hard drive, not the virtual hard drive, that is not the correct word, the logical hard drive that you see on your operating system, that is the term that is used for it. That is a completely different abstraction. Like you view the C drive or the D drive, or if you have just one single drive, as one contiguous array of locations where you can store data in. That is how you probably view it. In fact, that is how it is presented to you. But actually, it is physically discontinuous object. Like the hard drive may have different physical disks. Those disks are arranged like the data is stored on the disk in different ways. In order to optimize the access time and all these things, so the way data is stored on the disk is completely different than the way you perceive it when you are storing some file on your hard drive inside your operating system. So you can look up more details about this thing in these hard drives and the technology or the way the data is stored on these drives, disks. You can look it up in more detail. The point that we wanted to make here was that whatever happens in the physical domain, that is quite different in whatever appears to be happening in the operating system. Okay, so the operating system gives you a completely different picture than the thing that is going on in the actual physical space. Similarly, we talked about RAID. So RAID is basically a redundant array of independent drives. Now, in order to increase the reliability of your systems, computer systems, important computers like servers, web servers, or database servers that cater to the requirements of maybe different organizations and different people. So they need to be sure that even if one of their hard drive fails, so their system does not go down. Okay, so what they use is they use a redundant array of drives. Maybe they use say 4 drives. RAID level 4, I guess it requires that you have 4 physical hard disk drives, 4 physical different hard disk drives. And when you save one file, if I have this presentation on a RAID level 4 drive, so it will have 4 physical copies. So I will have 4 physical copies of this single file. Every single file will have 4 physical copies. That is redundancy. Okay, you don't need 4 physical copies, but it is helpful in the event when one of the drives or two of the drives they fail. So in that case, you do not lose your data. You have backup copies of your data. So there physically things are different, but logically you only see working with a single file, while physically that file exists on 4 different physical disks. Okay? So the partitions that you see, the C drive, the D drive, the logical drives, the file system, these are all abstractions. Okay? Drive, there is no physical division on the hard drive कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये लाइन किसी ने खींच दी है कि ये C drive है
और यहाँ से यहाँ तक जो है ना, दिस इज D ड्राइव, दिस इज ऑल, दीज आर ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स. योर फाइल सिस्टम FAT32 और NTFS, or if you're using Linux, ext2, ext3, these file systems, they are all data structures. A folder that you create, a folder is nothing but a data structure. So all in the information that it has कि जी इसमें कौन कौन सी files हैं और हर file को कौन कौन से sectors allocated हैं on the disk. So the file system is one huge data structure जिसमें ये सारा data पड़ा हुआ है. When you delete a file, the physical file may not be deleted. The physical data in the, by that we mean the physical ones and zeros, they would stay there. Only the data structure, the entry in the data structure, that is deleted. So we no longer say कि ये file जो है ना इसको ये sectors allotted हैं. We mark those sectors as free or available. So वो free space में count होता है. ठीक है? So that is how it works. So these are all abstractions. Similarly, we talked about virtual memory or page memory. Now this is something not related to object-oriented programming. This is more of computer systems concept. ठीक है? But nevertheless, these are important abstractions that work behind the scenes और वो इस्तेमाल होते रहते हैं. So we talked about the physical memory or RAM is limited. It is always limited. Even the hard disk that you have, you may have terabytes of space, but that is also a finite amount of space. So there is a limit that to everything in the digital space. ठीक है, कोई भी चीज़ unlimited नहीं है. So when you have limitations और आपकी requirements जो हैं they are beyond those limitations, so then you need to create abstractions जो कि ये impression दें कि जी हमारे पास बहुत जगह है. ठीक है, तो the physical RAM, ठीक है, at any given time the user is using one or two programs. The user is interacting with one or two programs. So अगर वो दो programs अच्छे चल रहे हैं, if they are more responsive, then the user does not feel any problem with the system. वो कह रहा है कि शायद सब ठीक चल रहा है. Like right now I am using Microsoft PowerPoint, so I need PowerPoint to be more responsive, and we are recording this session, so I need OBS Studio to be working properly. ठीक है? If there is any other, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, so please do not do things that force me to make such interruptions. ठीक है? So if you have like limited RAM and you want to give this impression to the application programs कि we have enough space, आप application को launch कर सकते हैं, you can launch a new application, तो उसके लिए the operating system uses part of your hard drive. ठीक है? So it creates a file, maybe on Windows that file is named as pagefile.sys. So there may be a system file by the name of page file. It would be hidden, but maybe C drive में या किसी और drive में, depending upon how the Windows operating system is managing your virtual memory, you will find this file pagefile.sys. So that file basically acts as virtual RAM. ठीक है? So the applications that you are not currently interacting with, those application, उनका जो data है, उनका जो code है, it is offloaded into the pagefile.sys. And once you get back to that application, so that data is then reloaded into the physical RAM. और कोई और application जो फिलहाल background में चली गई है, उसको offload कर दिया जाता है into the virtual RAM. ठीक है? So this is how it is managed. So it basically increases your overall system response और उसकी performance को. जी. Yes, like technically the question is कि if our physical RAM is just 2 GB, can we have a program जिसकी requirement जो है वो 4 GB है? So yes, the operating system gives this impression to that program कि आपके पास 4 GB space ही है. ठीक है? Actually आपके पास 2 GB physical है और वो भी आपको fully available नहीं होती. There is permanently resident operating system code. जो operating system का kernel है, say Windows का kernel है या Linux का kernel है, so that part of the operating system is permanently memory resident. वो memory में हमेशा रहता है. So if you have 2 GB of physical RAM, not all of that physical RAM is available to the application programs.
some of it, most of it would go to the operating system जिसमें उसका कोड जो है वो permanently resident होगा, ठीक है? So the remaining space is available to not just one application program but many application programs. So that is a problem, that even if you have 8 GB of RAM, you will have this problem at some point in time. So there is always the need of virtual memory, ठीक है? So virtual memory फिर क्या करता है कि हर जो प्रोग्राम होता है उसको मुख्तलिफ पेजेस में मेमोरी असाइन की जाती है, ठीक है? जस्ट लाइक पेजेस इन अ बुक. So a program may be allocated memory in say a fixed number of pages. Those pages of RAM which are being those pages of code or data जिसको currently आपका application access कर रहा है, that would reside in the physical RAM, and the other pages वो फिर virtual RAM में exist करते हैं. For example, आपका if you are running Microsoft PowerPoint, so PowerPoint is a huge software. उसमें you have plenty of menus and you have plenty of commands and options. Not all of that code is loaded into your into your physical RAM. So only that functionality which you need to say, for example, present this slideshow, so that is loaded in the RAM. The rest of it resides in the virtual memory space. ठीक है? So when you go and access that part, so वहाँ से फिर उसका code जो है, it may be loaded. So this is like your operating system manages all these things very cleverly, so that you do not have the impression कि यानी आपको बिल्कुल पता नहीं चलता. Your application thinks कि it has access to all the physical RAM available. Acha. Now from the perspective, similarly, you have used arrays in programming. Now we talked about the physical RAM yesterday. Maybe it didn't make a lot of sense to many people, but the physical RAM, it does not come as a single IC or a single chip. It comes as multiple chips. So those multiple chips, they are called sometimes, they are sometimes called as memory banks. So the physical memory comes in the form of different multiple physical memory banks. Now, in order to speed up things, any single IC that you have, so every single IC or chip that you have, it is accessible byte wise, like you can access a single byte in that IC. Okay, so this is good, like you can change or you can store or access byte sized data into a single IC. But it is problematic as well. The problem is that if you are accessing a single IC, so at a given cycle you can only access, write or read just 1 byte of data. So that can slow you down. That means if you have to read an integer value from RAM, you would at least need 4 cycles. ठीक है ना? If one cycle is 1 nanosecond wide, so that means कि आपको 4 nanoseconds लगेंगे एक integer value को read करने के लिए. Now system designers, they want to accelerate things. So what do? They store that single integer variable 4 bytes of data on 4 separate physical ICs. And since you have 4 separate physical ICs to access data from, that means you can access all those 4 physical ICs simultaneously in one cycle. So in a single cycle you are able to read 4 bytes of data. And if your system, like the data bus on your system, the wires that carry this data, if its width is more, like 64-bit, so then that system would try to read 8 bytes of data in a single cycle. Okay? So the integer value that you see as stored in one single location, it is actually stored in four different physical ICs. Okay? So this is the value of abstraction. Physical space में things are happening differently, but in your space as a programmer, you see them and you use them differently. That is how you create abstractions. Now this is the most important part. This is basically ये सारी जो तमहीद है वो ये memory model समझाने के लिए. So in C++, in this particular course, say in fact in any course, like in any programming environment, whenever you write a program, so that program has access to 4 different types of memory segments. Logically, physically, अब उसको भूल जाएं. Logically, when you write a program, so आपके program को 4 मुख्तलिफ किस्म की memories मिलती हैं. ठीक है? One is code segment.
The code segment is the segment of data, a segment of RAM where your machine code is stored. So आपके प्रोग्राम का machine code कहाँ पे store होता है? Code segment. And it also contains hard coded data. So if inside your code you say const int a is equal to 5, so now this variable a and this data 5, it is stored in the code segment. This is hard coded data. This becomes part of your machine code. Any data that you initialize inside your code, okay? So that becomes part of your code segment. All the literal, the constant values, okay? So that becomes part of your code segment. So that data goes into your code segment. So we have code segment, ठीक है, जिसमें machine code है और hard coded data है. So any constant and literals that you use in your code, that goes into the code segment. The next one is the stack segment. Now stack is a data structure as well, which we are going to study later on. Stack again, जैसे कि नाम से जाहिर है, it is a stack of things. One thing comes on top of another. ठीक है? Now stack is very important data structure, and stack is a very important segment of RAM जो कि आपके प्रोग्राम को accessible होता है. All the local variables that you declare, all the local variables and all the variables of automatic storage class, so they exist on the stack segment. जो भी local variables आप create करते हैं ना, local variables can have automatic storage class as well as static storage class. तो static जो variables होते हैं, they go to the static segment. ये जो segment है ना, static segment. So static segment किसी class का अगर static data member है, तो that static data member would also go to the static segment. या किसी वेरिएबल को आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं इनसाइड योर मेन प्रोग्राम, दैट वेरिएबल वुड आल्सो गो टू द स्टैटिक सेगमेंट. सो स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास या स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास, दे गो टू द स्टैटिक सेगमेंट. सिमिलरली ग्लोबल वेरिएबल्स, they also reside on a different part of memory, on a different segment of memory. या एक्सटर्नल वेरिएबल्स, ठीक है ना, आप if you are importing libraries into your code and those libraries have their own global variables or static variables, so they kind of are external variables जिनको आपने declare नहीं किया, but you are importing those libraries, those variables also go to the static segment. ठीक है? And similarly the stack segment, so stack segment में local or automatic variables, function के return addresses, you call one function and then how does your program know कि मैंने वापस कहाँ पे जाना है. So वो return address भी stack segment पे store होता है. Function के जो arguments हैं, you are calling a function and you are passing arguments to that function, so वो arguments भी stack segment पे pass होते हैं. They are put on the stack और वहाँ से वो किए जाते हैं. Similarly, we are mentioning here this term stack frame or activation frame. इसका दूसरा नाम है activation frame, function activation frame या stack frame. So आप अगर किसी function को call करते हैं, if you are calling a function, so when you call that function, so you are basically passing some data to that function. So the arguments that you pass to that function and उस function के जो तमाम local variables हैं या automatic variables हैं, all those variables and the arguments they make up the stack frame for that function. तो किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो उसको कॉल करने से पहले उसके लिए एक स्टैक फ्रेम से क्रिएट कर दिया जाता है. अ फ्रेम ऑन द स्टैक, बेसिकली स्टैक पे एक जगह आप रिजर्व कर देते हैं जिसमें उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स और उसके तमाम लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू होती है. ठीक है? और जब आप उस फंक्शन से वापस आते हैं तो उस स्टैक फ्रेम को रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है? तो दैट इज हाउ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. The other most important segment of memory is the heap memory or free memory. ठीक है? So the heap memory or free memory, it is used for dynamic memory allocation. So if you have dynamic memory requirements, you want to reserve data for some variable during runtime. Your program is running and at that time you want to reserve memory for some variable. वैसे तो आप तमाम you declare all the variables at compile time. जब आप कोड लिख रहे हैं तो आप तमाम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं. ठीक है? सो उनको कंपाइल टाइम पे स्पेस एलोकेट हो जाती है. दैट हैपेंस यूजुअली ऑन द स्टैक सेगमेंट. बट इफ ड्यूरिंग रन टाइम, स्टैक सेगमेंट पे रन टाइम पे भी होता है, अगर आप फंक्शंस को कॉल करते हैं ना तो वो फंक्शन तो रन टाइम पे रन हो रहा होता है, तो उसके लिए जगह वहाँ पे एट रन टाइम रिजर्व होती है और फिर एट रन टाइम उसको वापस लेते हैं आप. लेकिन हीप मेमोरी स्पेशल के जब आप प्रोग्राम आपका चल रहा हो और उस वक्त आपको ज़रूरत है स्पेस एलोकेट करने की, so then you can use the heap memory. Now in C++, if you want to reserve space on the heap memory,
you use the keyword new. So you use the new keyword, and when you use the new keyword, so an object is created on the heap memory, and the new keyword, it returns a pointer to that object. Okay, it returns a pointer to that object. So you have two different things. One is the physical object, which exists on the heap memory. The other is pointer to that object. उस object का address, that pointer exists somewhere else. So there are two things. और heap memory के बारे में we talked in our previous lecture that whenever you create an object on the heap using the new operator, ठीक है, so you use the heap for explicitly requesting or reserving space in RAM. तो जो चीज़ आप explicitly अपने लिए request करते हैं उसको फिर आपने explicitly return भी करनी होगी. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आई नीड सम स्पेस ऑन द हीप using the new operator, so that space must be returned as well, and for that we use the delete operator. So जब आप न्यू ऑपरेटर के जरिए जगह रिजर्व करते हैं, डिलीट ऑपरेटर के जरिए उसको फिर रिटर्न भी करनी है. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट करता है, सो हाउ डज दैट प्रोग्राम व्यू द रैम. वो प्रोग्राम रैम को किस तरीके से देखता है. सो द प्रोग्राम सीज रैम एज दीज फोर सेगमेंट्स, द कोड सेगमेंट, द स्टैक सेगमेंट, द स्टैटिक सेगमेंट, and the heap memory or free memory, yeah, heap segment you can call it. No, delete has to be explicitly used. You have to write delete when you create an object on the stack. आप कहते हैं ना rectangle R1. So rectangle R1 exists on the stack. जब ये out of scope चला जाएगा तो automatically destroy हो जाएगा. But if you say rectangle, अच्छा उस वो हम we'll see कि वो कैसे आप करते हैं. So we'll use that. तो अगर आप उसको create, if you create it on the heap using the new operator, then it must be deleted using the delete operator. Then it doesn't automatically gets destroyed when it goes out of scope. ठीक है? So you have to be careful. If you're not careful, you will write a code that will result in memory leakage, which we talked about yesterday. So there are three kinds of program data. Whenever you write a program, your program has three kinds of data. One is static data. Static data is allocated at compile time. It is initialized as well. Static variables, उनको initialize कर दिया जाता है, static segment में रख दिया जाता है, so it is done at compile time. The other is dynamic data. Dynamic data, it lives on the heap. It lives on the heap. Heap जो है ना, नाम वैसे ढेर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो heap का मतलब है ढेर, किसी चीज़ का ढेर. ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ दैट. तो इसको आप एक्सप्लिसिटली एलोकेट करते हैं, एक्सप्लिसिटली डी एलोकेट करते हैं. सो दिस इज योर डायनामिक डेटा. यू एलोकेटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड यू डी एलोकेटेड यूजिंग द डिलीट कीवर्ड. ठीक है, या डिलीट ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर. कीवर्ड इज नॉट द राइट वर्ड हियर. सो न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर्स. एंड देन यू हैव ऑटोमेटिक डेटा, जो आपके ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं. सो ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट ऑन द स्टैक सेगमेंट, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट फंक्शन एंट्री. जो भी आर्गूमेंट्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं जब आप किसी फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं. जैसे ही आप उस फंक्शन से बाहर निकलते हैं, वो तमाम वेरिएबल्स आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं एंड दोज वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्राम डेटा किस किस्म का है, कौन सा डेटा कहाँ पे होगा, किस डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है. स्पेशली इफ यू आर यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, so you should know that I need to use the delete operator as well. Otherwise, that data would remain reserved. That space would remain reserved, not data. The space would remain reserved. अच्छा, so this is how you can maybe visualize it. आपका ये program code है. This is your code segment. Then you have the static data. Then you have heap and the stack segment. So the heap and stack segment, they usually grow in opposite directions. ठीक है? अच्छा, मे बी ये आपको, although it is not discussed, but in the course on microprocessors and microcontrollers you might come across the stack once again. Hardware level पे stack कैसे manage होता है, especially when you are calling functions. So there is a stack segment inside your RAM जो कि आपका microprocessor जिसको manage कर रहा होता है. ठीक है, so the return addresses, they are pushed onto the stack. Similarly, जो function के arguments हैं, they are also pushed there. So you might be using the stack at a very, क्या कहते हैं, primitive or basic level जब आप उस course में जाएं. ठीक है, but this is how the picture looks. This is where your code is, program code and hard coded data. This is the static
सेगमेंट जिस पे स्टैटिक वेरिएबल्स रिजाइड करते हैं, एंड देन वी हैव द स्टैक एंड द हीप सेगमेंट्स. ठीक है, तो प्रोग्राम को जो फिजिकल स्पेस एलोकेट होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉजिकल सेक्शंस. ठीक है. How was dynamic memory allocation done in C? So in C we had these functions malloc, memory allocate, and then dealloc, I guess. So वहाँ पे you use this function malloc for dynamic allocation of memory on the heap. In C++, it has been like simplified in a sense. Now you use the new operator. और malloc में you had to specify कि आपको कितने bytes of data चाहिए. ठीक है, और किस टाइप का पॉइंटर आपको रिटर्न में चाहिए. यहाँ दिस इज काइंड ऑफ ऑटोमेटेड. यू जस्ट से रेक्टेंगल पॉइंटर टू रेक्टेंगल R1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और फिर न्यू को पता होता है कि हाउ मेनी बाइट्स डू आई नीड टू एलोकेट फॉर द रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट. So the new operator is used to allocate memory during execution time. New operator आपको क्या रिटर्न करता है? You must remember it returns your pointer to the object. It does not return you an actual object or a reference. It returns your pointer. Address आपको बताता है. किस चीज़ का एड्रेस? उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस ऑन द हीप. हीप मेमोरी पे जो ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया है, so उसका एड्रेस आपको रिटर्न करता है. So we have these two different things. For example मैं आपको यहाँ पे देता हूँ. Say we have these two objects, rectangle R1, and we have rectangle pointer to rectangle R1. So this object, and this is instantiation of rectangle object R1. So this object R1 is created on the stack segment page. This is your stack segment. Okay? So stack segment पे R1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है. इसका W bit attribute, this is the length attribute, दो इंटीजर डबल वैल्यू. So this object would exist on the stack. What is this? This is pointer to a rectangle object. This is not an actual object. This is just a pointer. ये कहाँ पे reside करेगा? This would also reside on the stack segment. But this is a pointer to a rectangular object. Here we should have an address, but we do not have any address right now. यहाँ पे there must be some garbage there. No actual physical object has been created. When you declare a pointer to an object, no actual physical object is created. ठीक है? When you do something like this, when you say R2 is equal to new rectangle, now a physical object is created. Where it is created on the heap. This is the heap. The heap पे a physical object is created. ये उसका width attribute है. This is the length attribute. And the address of this object, whatever its address is, say its address is 0x6FE2D. For example, this is its decimal address. This address is copied into this point. ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 6FE2D. Say for example, this address will be copied. So when you use the new operator, so you have to think of two different things. One is the actual object that will store the object which I produce. The other is pointer to that object. Okay? Pointer to that object. Direction of the arrow. We have two different things. The pointer is a separate entity. This object is a separate entity. If you lose this pointer, if you lose this address, you basically lose a handle to this object. You cannot access this object. Okay? So this is important. You are not going to change this pointer without any good reason. If you want to change it, you need to store this value, because this is the address of an actual rectangle object. This is how you use new. New would create object on the heap, a separate memory segment. And when you need to get rid of this object, you need to use the delete operator. Delete R2. So this would delete this object. Reclaim this memory. This would reclaim this memory. G? Pointer would be there. The pointer is not deleted. The object is deleted. Delete does not delete the pointer. Delete deletes the object जिसका एड्रेस उस पॉइंटर में मौजूद है. ठीक है?
Can you have can you have a pointer which stores the address of an object on the stack? Yes, you can. There are two objects. Now, if you have created it, G? Yes, you can have pointer to anything. No problem with that. You can have something like this. Say, for example, rectangle pointer to a rectangle object R3, and you can say like this should follow ये यहाँ पर होना चाहिए या इसको यही कर लेते हैं. You can say R3 is equal to address of R. ठीक है? So we have another pointer R3 of type rectangle, and it will have the address of this object. ठीक है? इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे instead of doing this that point yeah, you can say it like this. This is as direct as you can get. There is no more direct way than this. But this declaration should be first. Whenever you use the new keyword, then you are basically dealing with two different segments. The actual object lives on the heap, the address is in the stack segment. When you have to use new, when are the situations when you need to use the new operator? Those are the situations. पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कब आपको न्यू कीवर्ड यूज करना है या न्यू ऑपरेटर यूज करना है. So when you need to create or allocate memory dynamically when your program is already running, at that time you need to allocate memory to some variable, then you need to use the new operator. तब आपको new operator की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, that is one. अच्छा, जब आप न्यू ऑपरेटर को यूज करेंगे तो बेसिकली यू विल बी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द हीप और उसका एड्रेस आपको रिटर्न किया जाएगा. न्यू वुड रिटर्न यू द एड्रेस और पॉइंटर टू दैट ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. नाउ वो जो पॉइंटर है वो कहां पे जाएगा? तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ दैट दैट पॉइंटर. ठीक है, तो अगर वो पॉइंटर आप नॉर्मल जिस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आप ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, तो वो स्टैक सेगमेंट पे जाएगा. अगर आपने उस पॉइंटर को भी हीप पे रखा हुआ है, लाइक यू हैव डिक्लेयर्ड इट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर एज वेल. ठीक है, मैंने वो काम अभी नहीं किया हुआ है. पीपल यूजुअली डोंट डू दैट फॉर विदाउट अ वेरी गुड रीजन. तो यूजुअली जब पॉइंटर आप डिक्लेयर करते हैं इट इज ऑलवेज अ लोकल वेरिएबल ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, तो वो हमेशा स्टैक पे ही जाएगा. लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, मैं पॉइंटर को भी रखता हूँ ऑन द हीप, सो देन यू नीड टू क्रिएट द पॉइंटर यूजिंग द न्यू ऑपरेटर एज वेल. ठीक है, मैंने वो काम फिलहाल आई हैवंट ट्राइड दैट, बट योर क्वेश्चन इज कि पॉइंटर हमेशा स्टैक पे होगा. नहीं नहीं नहीं, डिलीट यू यूज इट व्हेन यू आर डन यूजिंग द ऑब्जेक्ट. जब आप ऑब्जेक्ट आपके काम सारे कर ले तो तब आप डिलीट यूज करते हैं. ठीक है, यूजुअली in the second part of this course when we will be working with data structures, so you use the delete operator usually in most data structures inside the destructor. Destructor में आप delete use कर रहे होते हैं. Destruction में फिर आप actual उन objects को delete कर रहे होते हैं जो destructor function है. Constructor function या किसी और member function में you are using the new operator, you are creating objects, और फिर when you are done using that object and when it is about to be destroyed, then the destructor function is automatically invoked. There you use the delete operator. बारी बारी उन तमाम objects को which you created on the heap, you are basically deleting those objects. ठीक है, so it is not necessary कि new के फौरन बाद जो है वो delete use करना है. delete आप तब use करेंगे जब आप when you are done using that object. ठीक है, so this is totally up to you, voluntary है. आप जब आप object create करना चाहते हैं then you create it, जब आप ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं देन यू डिलीट इट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे उसको डिलीट करना है. नहीं, व्हेन यू आर डन यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट देन यू डिलीट इट. In normal life, we have straight off. So, in order to access the something that is at the end, we have to remove all the elements from the top. Yes. So,
Same here with the stack. In the stack segment, the stack segment exactly operates in that way. ठीक है, जो एक्चुअल उसका बिहेवियर है वो उस तरीके से काम करता है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. इट हैपेंस बियॉन्ड बिहाइंड द सीन्स. आपको नहीं पता कि ये वेरिएबल स्टैक पे क्रिएट हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, सो मे बी जब आप वो करेंगे ना, यूज करेंगे, इफ यू आर यूजिंग द स्टैक डायरेक्टली एज अ प्रोग्रामर इन असेंबली लैंग्वेज, देन यू बेसिकली यू नो कि अब उसी तरह टॉप पे चीजें आ रही हैं. बट देयर आर ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस वेयर यू कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम एनी लोकेशन. आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि वो स्टैक की तरह उसको फॉलो करें कि पहले टॉप से सारा. तो वो बात सिचुएशन में दैट इज यूजफुल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द बैक बटन ऑन योर ब्राउजर, सो इन दैट केस यू शुड बी डूइंग इट दैट वे. अगर आपने सबसे पहले पेज को जो विजिट किया है वहां तक पहुंचना है, तो आपने उससे पहले तमाम पेजेस को या विजिट करना है या उनको स्टैक से रिमूव करना है. ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली आपको एक्सेस देता ना, या अगर आपने कभी अनडू किया हो, सो इफ यू गो टू द अनडू एंड यू गो टू द, तो वो कहते हैं अनडू लास्ट 10 एक्शंस और 15 एक्शंस, सो यू हैव टू डू अनडू ऑल दोज एक्शंस. आप ऐसे नहीं कह सकते कि अनडू ओनली द लास्ट 15th एक्शन, बाकी 14 को रहने दें, 15 को हटा दें, 16 को भी रहने दें, 14 को भी रहने. ऐसे नहीं, आपने ये पूरे 14 को या पूरे 15 को अनडू करना है. दैट इज द ऑप्शन दैट यू गेट. सो दैट इज अ टिपिकल स्टैक बिहेवियर कि आप अगर 14वें एलिमेंट तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले 13 को आपने स्टैक से रिमूव करना है. This is how you use the new operator. I guess in one of the lab sessions like we have talked about it. इसमें दो वेरिएशंस हैं. वन, यू आर असाइनिंग वैल्यू फॉर अ स्केलर वेरिएबल. ठीक है, दूसरा कि आप अरे क्रिएट कर रहे हैं. So you can use the new operator with any data type. It can be an integer, like you can create an integer on the stack. You can create a double on the stack. ठीक है, and you can create an object of type rectangle on the stack. तो आप किसी भी डेटा टाइप के लिए इसको यूज कर सकते हैं. ये रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि जो आपने क्लासेस डिफाइन की हैं सिर्फ उनके लिए यू कैन यूज द न्यू ऑपरेटर. So if memory is available on the heap, new allocates the requested object or array and return the pointer. So here, this is basically a request for allocating space for one variable, okay, of any data type. It can be an int, a character, a double, a float, a rectangle object, a my complex object, a fraction object. It can be anything. And this is what you do for an array. If you want an array of objects to be created on the heap, so you can use this syntax for that. यहाँ पे आप एक integer value size of the array specify कर देते हैं. 10 elements create करने, 10 objects create करने, 20 create करने, या you can have an expression which evaluates to an integer value 2 plus 5 multiplied by 3 or something like that. So you can have that expression as well. So it returns you a pointer to that element या point to the first element of the array. अगर आप array create कर रहे हैं, so you get a pointer. तो वो तो अरे है और अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो वो पॉइंटर किसका है? वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट अरे का है. बाकी एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यू शुड थिंक अबाउट दैट कि वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं. इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, जी लूप के जरिए, बट अरेज जो नॉर्मल अरेज आप एक्सेस करते हैं, सो यू एक्सेस नॉर्मल अरेज यूजिंग देयर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 गोइंग अप टू लेंथ -1. अरे की जो लेंथ है -1. बट हियर यू हैव पॉइंटर्स. ठीक है, तो पॉइंटर्स के जरिए आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो द पॉइंटर दैट यू गेट इज दैट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द अरे. सो नेक्स्ट को आप कैसे एक्सेस करेंगे? यू नीड टू इंक्रीमेंट दिस पॉइंटर, सो यू विल गेट टू द नेक्स्ट वन, देन इंक्रीमेंट इट फर्दर, यू विल गेट टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, सो बाद लोग क्वेश्चन करते हैं पॉइंटर्स आल्सो हैव डेटा टाइप्स. यू हैव इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, डबल पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर. जब पॉइंटर इज एन एड्रेस, व्हाई डज इट नीड टू हैव अ डेटा टाइप? एड्रेस की डेटा टाइप क्यों जरूरी है? पॉइंटर्स दे आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस, है ना. कैरेक्टर का एड्रेस, डबल वेरिएबल का एड्रेस, दे आर ऑल द सेम, दे आर एड्रेसेस. सो व्हाई डज अ पॉइंटर नीड टू हैव अ डेटा टाइप? नहीं, अच्छा, क्लोजर बट मे बी नॉट एग्जैक्ट. कोई और? So I maybe you haven't heard of something called pointer arithmetic.
पॉइंटर्स को आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं. यू कैन से पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन और प्लस प्लस इंक्रीमेंट पॉइंटर. अच्छा, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के इफ यू हैव पॉइंटर टू अ कैरेक्टर वेरिएबल, what is the size of a character variable? 1 byte. If you increment pointer to a character variable, it will be incremented by 1. If you have pointer to an integer variable, what is the size of integer? 4 bytes. If you increment pointer to an integer variable, it will be incremented by 4 because it has to point to the next integer. If you have pointer to a double variable, so what is the size of a double variable? 8 bytes. If you increment pointer to a double variable, it will be incremented by 8. Why? Because it has to point to the next double variable. The next double variable will be after 8 memory locations. That is why it is important that whenever you declare a pointer, you need to specify the type of pointer. So the compiler knows कि अगर मैंने next character को access करना है तो कितना मैंने इस पे increment करना है, next अगर integer को access करना है तो कितना increment करना है, next अगर मैंने double variable को access करना है तो कितना वो करना है. And similarly, if it is pointed to an object, rectangle object, अगर मैंने next rectangle object को access करना है तो मैंने इसको कितना increment करना है. So जब आप कहते हैं ना pointer is equal to pointer plus 1, so it is not incremented by 1. 1 here means the next character or the next integer or the next double or the next float depending upon उस pointer की data type क्या है. ठीक है? So that is why although pointers they store addresses, it is important that you specify their types so that your compiler knows कि अगर मैंने using pointer different values को access करना है तो मैंने उसको कितना increment करना है. If a pointer is storing one, so if we increment it, If a pointer is to storing one, number one. So if we increment it, it will give us two. no, a pointer stores an address. So the addition operator, the increment operator, it is overloaded for a pointer. If a pointer has an address 1, if you increment it, it will not become 2. It may become 2 if it is pointed to a character. It may become 5 if it is a pointer to an integer. It may become. I'm not talking about that one, I'm talking about integer one. 1, 2, 3, 4. You're talking about the value stored inside the pointer? Yes. I'm also talking about that. अगर उस pointer के अंदर value 4 है for example, 4 value numeric value 4 है but 4 is an address. Addresses are numbers. ठीक है? By the way, when we use the term address, so addresses on a computer are numbers. उसमें कोई street या sector नहीं होता, वो number ही है. आपके पास you have 4 GB of RAM, पहले location का address for simplicity let us assume it is 00. आखिरी location का address is 4 billion something. So वो numbers ही हैं. So a pointer stores an address, that means it is a number. अच्छा, अब आप जब उसको इंक्रीमेंट करते हैं उसमें फर्ज के 0 की वैल्यू है, जब आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या 1 बनेगा? तो इसका आंसर है वी डोंट नो, वी नीड टू नो द टाइप ऑफ द पॉइंटर. अगर पॉइंटर का टाइप कैरेक्टर है तो 1 बनेगा क्योंकि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है. पहला कैरेक्टर अगर एड्रेस लोकेशन 0 पे है तो दूसरा कैरेक्टर एड्रेस लोकेशन 1 पे होगा अगली बाइट में. अगर हमारे पास पॉइंटर की टाइप इंटीजर है तो पहला इंटीजर अगर एड्रेस नंबर 0 पे पड़ा हुआ है तो दूसरा वाला फिर 4 पे पड़ा होगा, तीसरा वाला फिर 8 पे, फिर चौथा 12 पे. अगर पॉइंटर इट इज पॉइंटिंग टू अ डबल वेरिएबल तो पहला जो डबल अगर 0 पे है तो नेक्स्ट डबल वुड बी एट एड्रेस 8. सो ये जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द पॉइंटर कि कौन सा पॉइंट किस टाइप का पॉइंटर है तो उस हिसाब से वो इंक्रीमेंट होता है. ठीक है? अंडरस्टैंड? अच्छा, इफ न्यू ऑपरेटर कैन नॉट लाइक देयर इज नो फ्री स्पेस ऑन द हीप और जगह नहीं मिलती तो इट विल रिटर्न एन एरर. ठीक है? अच्छा, देन देयर इज एन एग्जांपल. अच्छा, लेट अस वेट फॉर द प्रोजेक्टर टू कम ऑनलाइन. So always have this picture in mind whenever you are using the new operator, the actual object and the variable or pointer that you are going to use to access that object, they are two different entities. This is an example. Say for example this variable ptr, it is pointed to a character variable. ठीक है? जब आप कहते हैं pointer ptr is equal to new character, now a character variable is created on the heap and its address is copied into this variable ptr. ठीक है?
and you can access that character जो उसमें store ये dereferencing operator है whenever you have a pointer and you want to access the contents of that pointer so you use the dereferencing operator. This asterisk is the dereferencing operator. ये multiplication operator भी के तौर पे ये इस character काम करता है और when you are using it with pointers so it acts like a dereferencing operator. Dereferencing मतलब contents of इसको आपने read कैसे करना है contents of location pointer यानी पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स उसमें जो डेटा या वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है ठीक है सो बेसिकली आप उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं अगर आपने उसको प्रिंट करना है सो यू यूज दिस सिंटेक्स अगर आप सिंपल पीटीआर कहते हैं सी आउट पीटीआर तो पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट होगी एड्रेस प्रिंट होगा अगर आप उस एड्रेस पे जो डेटा स्टोर्ड है उसको प्रिंट करना चाहते हैं सो यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटर कंटेंट्स ऑफ दैट लोकेशन ठीक है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर ठीक है डायनामिक डेटा हैज नो वेरिएबल नेम डायनामिक डेटा जो है ना वो नेमलेस है उसका कोई नाम नहीं होता उसको आप कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग द एड्रेस और पॉइंटर इफ यू लूज दैट एड्रेस यू लूज दैट डेटा ठीक है सो यू जी हाँ वो मेमोरी यू लूज दैट मेमोरी एज वेल अंटिल यू रीसेट द सिस्टम जब रीसेट करते हैं तो सारे प्रोग्राम वो चले जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है या जब तक आपका सिस्टम रन कर रहा है दैट मेमोरी इज इन एक्सेसिबिलिटी बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मार्क कर देता है एज इन यूज तो ये यूज में है किसी प्रोग्राम पे when you use the new operator you are requesting memory from the operating system ठीक है you are interacting with the Windows operating system हर कोड ये तमाम कोड जो है ना यानी ये सी आउट और सी इन जब आप करते हैं तब भी यू आर इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है बट यहाँ पे भी आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सो यू आर रिक्वेस्टिंग मेमोरी फ्रॉम देयर अच्छा जी पॉइंटर आपने क्रिएट किया उसमें ये एड्रेस आ गया ठीक है ये पॉइंटर का अपना एड्रेस है और ये पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर्ड है वो है ये एड्रेस किसका है ये इस वेरिएबल का है जो कि हीप में क्रिएट होता है फिर उसको आप ये वैल्यू असाइन कर देते हैं और फिर उसको आप एक्सेस करते हैं अच्छा you might have heard about null pointer so null is a keyword or a constant I am forgetting but null means zero it does not exactly mean zero लेकिन null pointer means कि ऐसा pointer जो किसी चीज को point ना कर रहा ऐसा pointer जो किसी चीज it does not mean कि physical address zero it does not mean the address of memory location जिसका physical address zero है so you use the null pointer किसी भी अगर आपने कोई pointer आपके पास है and it does not store any other value any other address so you should always assign it the value null आप उसको null value assign कर किसी pointer को बगैर किसी value के ना छोड़ें why because pointers using pointer you can access any location आजकल तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रा अच्छे हो गए हैं वो आपको ये इजाज़त नहीं देते बट पहले इस तरह पॉइंटर मेमोरी वायलेशंस होती थी कि पॉइंटर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया आप किसी और प्रोग्राम का डेटा एक्सेस कर रहे हैं अब तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को ये इजाज़त नहीं देते ठीक है बट पॉइंटर्स लाइक दे कैन मेस अराउंड विद थिंग्स यू कैन मेस अराउंड विद योर ओन डेटा अगर आपका पॉइंटर जो है ना इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द पॉइंटर तो आप उसको इनिशियलाइज कर दें विद द वैल्यू नल दैट इज अ वेरी गुड आइडिया व्हेनेवर यू क्रिएट अ पॉइंटर इनिशियलाइज इट विद द वैल्यू नल फिर अगर आपने उसको कोई और वैल्यू देनी है तो इट्स फाइन ठीक है इफ अ पॉइंटर हैज द वैल्यू नल ठीक है सो यू कैन नॉट डी रेफरेंस इट यू कैन नॉट तो अगर आप उसको डी रेफरेंस करना चाहते डी रेफरेंस ये है ये जो यहाँ पे हमने ये काम किया है दिस इज डी रेफरेंसिंग so if a pointer has null value you cannot dereference it you cannot access contents of that pointer this will give you an error ठीक है अच्छा so again null pointer so you should know कि null pointer क्या है null pointer does not point to anything ठीक है and whenever null is a constant value whenever you create a pointer and if it is not pointing to anything just initialize it with null do not leave it like that उसमें अगर कोई गार्बेज एड्रेस आ गया ना तो वो एड्रेस फिर किसी चीज को खराब कर सकता है या एक्सेस वैसे ही अननेसेसरली करे what is the syntax for delete this is the syntax for delete if you create an object on the heap using the new operator this is how you delete it delete is the keyword and फिर आप उसको वो पॉइंटर बताते हैं तो से अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है R2 को जिसको हमने हीप पे क्रिएट किया तो यू विल से डिलीट R2 तो वो उसको डिलीट कर देगा ठीक है द ऑब्जेक्ट और अरे करंटली और अगर आपने फिर अरे क्रिएट किया ऑन द हीप सो यू हैव टू यूज दिस इज द सिंटेक्स डिलीट एंड देन ये जो अरे का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं एंड देन द पॉइंटर टू दैट अरे
So that will delete the entire array of objects जो कि वहाँ पे create हुई है. So इससे क्या होता है? The object or array currently pointed to by the pointer is deallocated. उसको deallocate कर दिया जाता है. That memory is free. It can be used by other objects. ठीक है? Good idea to set the pointer to release memory to null. जो आपने memory release कर दी वो pointer तो रहता है. तो उस pointer को then you should set it to null. ठीक है? Pointer delete नहीं होता. When you say delete pointer, it does not delete the pointer. It deletes the object जो जिसको ये pointer point कर रहा है, जिसका address इस pointer में मौजूद है. So this is how you use the delete operator. जब आप कहते हैं ना delete pointers, तो ये object delete होगा, ये pointer रहेगा. So once you delete this object जिसको ये pointer point कर रहा है, you should assign it the value null. इसको null की value आप assign करते हैं. ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, पॉइंटर रहता है. अच्छा जी, दिस इज अनदर एग्जांपल जहां पे एक कैरेक्टर अरे क्रिएट हो रही है यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, और फिर आप उसको कुछ वैल्यू असाइन कर यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, फिर उसकी किसी वैल्यू को आप एक्सेस करते हैं, देन यू डिलीट इट और सेट द पॉइंटर टू नल. यू कैन ट्राई दिस कोड. अभी ट्राई करने का मेरे पास टाइम नहीं है, बट इट शुड बी इजी. यू कैन ट्राई दिस कोड सो दैट आपको पता लग जाए कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज कैसे करना है. सो व्हेन यू डू दिस, सो आप 5 कैरेक्टर्स की एक अरे क्रिएट कर रहे हैं ऑन द हीप, और उसका जो एड्रेस है पहले एलिमेंट का, वो एड्रेस आपके पास इस पॉइंटर पीटीआर में स्टोर हो जाता है. फिर आप ये स्टेटमेंट जब करते हैं तो उस पॉइंटर आप ये स्ट्रिंग बेसिकली कॉपी कर रहे हैं. सो बी वाई ई 3, और ये आखिर में यहाँ पे ये न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है या नल कैरेक्टर आ जाता है. नल कैरेक्टर बेसिकली न्यू लाइन तो नहीं है, नल है. इट बेसिकली टेल्स कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा है. ये जो कैरेक्टर है ना /0, दिस इज द नल कैरेक्टर. ठीक है? सो इट बेसिकली सिग्नल्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई. अच्छा जी, चेक्स में हाँ, वो आप क्या इसलिए लिखते हैं कि उसके बाद कोई पैसे जीरो एक्स्ट्रा ना डाल दे. ठीक है? लेकिन वो // वो करते हैं. अच्छा जी, जब आप कहते हैं यू यूज द पॉइंटर, सो दिस इज एन अरे दैट यू क्रिएटेड, सो यू कैन यूज इंडेक्सेस. ठीक है? तो आप 1 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. इट शुड बी 0 आई गेस. मुझे यू ट्राई इट, ये इस तरह होता है या नहीं. तो आप बेसिकली उस कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं. देन व्हेन यू से डिलीट पीटीआर, तो आप इस अरे को डिलीट कर रहे हैं. ठीक है? सो इट डीएलोकेट्स द अरे पॉइंटेड टू पॉइंट. पॉइंटर इन इटसेल्फ इज नॉट डीएलोकेट. ये पॉइंटर रहता है, ये डीएलोकेट नहीं होता, लेकिन इट्स वैल्यू बिकम्स अनडिफाइंड. सो यू शुड असाइन इट द वैल्यू नल. दैट्स इट फॉर टुडे. ठीक है? फॉर्चुनेटली वी कुड फिनिश इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जी, यू कैन आस्क. नहीं है? फाइट प्लीज जी. हाँ जी, द क्वेश्चन इज कि does the C++ compiler have any option कि even if you don't initialize a pointer, it should like assign null to it? This question has more to do with the language. ठीक है? Some languages require that every variable must be initialized. If you do not initialize it, the compiler automatically initializes. ठीक है? C++ is not that language. C++ gives more control to the programmer, which is good and which is bad as well. More control to the programmer means you can do things the way you want. The programmer can do things the way he or she wants. And more control also means that you have more responsibility. So now the responsibility of initializing variables, it is with you, the programmer. The compiler does not take care of it. So is it possible? Yes, it is possible. Is it done? No, it's not done. It can be done, but it's not done. Why? Because it has to do with the language, the C++ language. So the standard does not put this limitation on the compiler कि आप initialize करें हर pointer को to null या हर integer variable को to 0. ठीक है? So that restriction is not on the compiler. It is done in other languages. तो और जो languages हैं उसमें जब आप variables को यूँ create करते हैं तो वो खुद ही automatically initialize करते हैं. Visual Basic.NET, I guess C# में और Python, so they all do initialization by themselves automatically. Constructor,
Yeah, so अब objects के केस में you are provided with a constructor. You are given the opportunity to code. Again वो खुद data members को initialize नहीं करता. The default constructor does nothing. The default constructor is the constructor that is provided to you by the compiler. That it does not do anything useful. ठीक है? So क्वेश्चन वहीं पे रहता है कि आप जो भी वेरिएबल C++ में यहाँ डिक्लेयर करते हैं वो इनिशलाइज नहीं होता. इनिशलाइजेशन आपने करनी है. We can create a You can create a library, but you cannot change the language of the compiler. आप libraries create कर भी लें तो compiler ने आपके कोड को नए कोड को compile करना है. so sir, we can create a library in which we get You have to write your own compiler. ठीक है?